Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning. Good Good morning. morning, Good sir. morning, everybody. Good morning, students. Today we have to revise Unit 8 Basic Geometrical Concepts that I have already written here. First of all students, I have instructed to you two things. First things that mute yourself. Second things, on your video. If you have doubt in any topics, any terms, you will raise your hand and ask questions. First of all, in the chapter Basic Geometrical Concepts, all of you know the term point. Point. In the chapter, we have need to revise all the terms that I have taught in continued class. First topic, point. What do you mean by the term point? Point has an exact location. Point has an exact location. Exact location. It has no length, no breadth, no height. It has no length, no breadth, no height. We can confirm that this symbol, आपको दिख रहा होगा ये symbol? Yes, sir. Okay. Point has an exact location. It has no length, no breadth, no height. This is represented by the symbol single dot. This is called dot. इसको हम डॉट बोलते हैं और इसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं. This dot named with the capital letter of alphabet. इस डॉट को हम कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. एनी कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट. नाउ वी कम ऑन सेकेंड टॉपिक. अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं. आप सभी मेरे साथ रिवाइज करें. ऑल ऑफ यू नीड टू राइट दीज पॉइंट्स ऑन योर रफ कॉपी and learn, revise many times with proper diagram. With proper diagram. Okay. Now we come on second topic. अब हम second topic पे आते हैं. Second topic is line. Second topic is line. Line is a straight path. Line is a line is a straight. Straight means सीधा. Straight path. Line is a straight path which extends यानी फॉरवर्ड होना. extends endlessly
endlessly in both direction. Endlessly on both the direction. आप देख रहे हैं, ऐसा ही मैं एक फिगर आपको दे रहा हूं, ये देखिए, स्ट्रेट पाथ है एंड एक्सटेंड endlessly in both direction. We name the line with a small letter of alphabet because it has no any end point, so it has no end point, so it has no end point. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. Students, till now we have revised of two terms. First term, a point. Point has an exact location which has no length, no breadth and no height. And next term, line. Line is a straight path which extend endlessly on both direction. Both direction में ये endless extend हो रहा है. So it has no end point. इसका कोई end point नहीं है. So we can't measure the length of line. We can't measure the length of line. हम लोग लाइन का कोई भी लेंथ मेजर नहीं कर सकते हैं. आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. माय नेक्स्ट टॉपिक इज रे लाइन सेगमेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज line segments. Line segment is the portion of line. It should be capital L. A line segment. Line segment is a portion of line. Line segment क्या है? एक लाइन का पोर्शन है. कैसा पोर्शन है? सपोज दैट दिस इज लाइन एंड इट्स पोर्शन दैट्स नेम ए एंड बी. सो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. वी सेपरेट कंस्ट्रक्ट these names A, B, P, Q, anything. It has two end points. Line has no end point, but line segment has two end points. So we write here, it has two ends, two end points. It has a definite length. यही कारण है कि इसका लेंथ भी फिक्स है, डिफिनिट होता है. It has a definite length. It has definite length. Students, you observe that line is the straight path which extend endlessly on both direction, but line segment is the portion of line. Line has no end point. Line segment has two end points. Line is not a fixed length, but line segment has fixed length. Line, we can measure the length of line. We cannot measure the length of line, whereas we can measure the line segment. यानी लाइन का हम लोग मेजर, लेंथ का मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट का कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज लाइन हैज नो एंड पॉइंट, बट लाइन सेगमेंट हैज two end points. Now we come on plane. अब हम आते हैं प्लेन क्या होता है. स्टूडेंट्स, आई एम इंस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ यू, all these points you must write in rough
so many times and revise properly, learn carefully. My next topic is plane. Plane. Plane is a flat surface. Plane is a flat surface. Plane is a flat surface which extends infinitely in all direction. In all डायरेक्शंस. ऑल डायरेक्शन में इंडलेसली एक्सटेंड होता है, वही प्लेन सरफेस होता है. एज फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट सरफेस ऑफ बोर्ड. देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स. सरफेस ऑफ बोर्ड. Other example, tabletop, etc. A screen of mobile, a screen of computer, a screen of tab, a screen of laptop, surface of wall. So many examples can be given against plane. Plane is a flat surface, बिल्कुल flat surface होता है, which extends infinitely in all direction. all direction में देखिए, ये बिल्कुल all direction में बिल्कुल flat surface है. ये आपको दिख रहा है, बिल्कुल flat है. whereas ये मार्कर है, इसका आप देख रहे हैं, ये फ्लैट नहीं है, ये फ्लैट नहीं है. तो ये क्या हुआ? ये कर्व हुआ. जो फ्लैट नहीं होता उसको कर्व बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, कर्व. अब हम कर्व पे आते हैं. जो भी सरफेस फ्लैट नहीं है वो कर्व है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सरफेस, प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस. So we come on next, curve surface. Curve surface. Curve surface क्या है? The surface which have no flat. Surface which have not flat. Surface which have not flat. Surface which have not flat is called curve surface. Curve surface. Surface which have not flat is called curve surface. आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं. There are so many examples for curve surface. First of all, marker, pencil, pen, ball, glove, etc. ऑरेंज, एप्पल, गुआवा. ऐसा सरफेस जो बिल्कुल इस तरीके का हो, कर्व हो, फ्लैट नहीं हो, उसे वो कर्व सरफेस बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी कम प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट एंड लाइन. अब हम आते हैं
पॉइंट और लाइन से रिलेटेड कुछ रूल्स है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं. पॉइंट्स से रिलेटेड properties of point and line. My topic is properties of point and line. Point and line. आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी. An unlimited number of lines and unlimited number of lines and unlimited number, unlimited मतलब कि अनगिनत, many number of lines can be drawn passing through a given point in a plane. इसका मतलब ये हुआ, यू हैव गिवन अ पॉइंट, आपको एक पॉइंट दिया जा रहा है. देन हाउ मेनी लाइन कैन ड्रॉ थ्रू दिस पॉइंट? वन पॉइंट. इस एक पॉइंट से पहला लाइन, सपोज दैट दिस नेम M, अदर पॉइंट दिस नेम N, अदर पॉइंट. It means that we can draw unlimited number of line can be drawn if we given only one point. अगर एक पॉइंट दिया जाए तो इससे हम so many lines ड्रॉ करते हैं. देन आंसर क्या हुआ? अनलिमिटेड other word many, other word infinite, etc. ये कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. अनकाउंटेबल भी यूज कर सकते हैं. अनकाउंटेबल. स्टूडेंट्स, आप ये समझ लीजिए कि जब आपको एक पॉइंट दिया जाए तो एक पॉइंट से आप इतने सारे अनगिनत, अनलिमिटेड, मेनी, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. वेयरएज अब सेकेंड पॉइंट आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट एंड लाइन. सेकेंड पॉइंट क्या है आइए देखते हैं. Second point is one and only one line, one and only one line can be drawn, one and only one line can be drawn passing through
passing through two given points. Two given points in a plane. It means that you have given 2 point. You observe here carefully. आपको 2 पॉइंट दिया जा रहा है. How many line can be drawn? Through these 2 point. इस दोनों पॉइंट का यूज करके हम only one line draw कर सकते हैं. Only one. These name, these 2 points name AB, PQ, RS, anything. But this is only one. ये सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉन किया जा सकता है 2 पॉइंट से. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, we have revised here 2 properties about point and line. First property, unlimited number of line can be drawn passing through a given point. एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. एंड सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने क्या रिवाइज कराया कि one and only one line can be drawn passing through two given points. यदि एक पॉइंट दिया जाए तो हम मेनी लाइन ड्रॉ करते हैं और 2 पॉइंट दिया जाए तो हम ओनली वन, सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. योर नेक्स्ट टॉपिक कॉलिनियर पॉइंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज collinear points. Collinear points. 3 or more points in a plane. 3 or more. 3 or more points in a plane which lie on the same line. Which lie on the same line are called collinear points. तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जब देखिए एक ही लाइन में आए, A, B, C, there are 3 points given lie on same line. If we join it, only one line we can draw. So these 3 points is called collinear point. Whereas non-collinear points, the point do not lie on a line. Non-collinear points, the point do not lie on a line. The points do not lie on line. Suppose that point A, here point B, and here point C. If join the all points, we make a closed figure of these 3 points, because 3 points are not in a same line. Same line में 3 points नहीं है. So these 3 points called non-collinear points.
3 or more points lie in plane, same line, called collinear, but points do not lie on line, called non-collinears. Now, next topic, intersecting lines and parallel lines. Intersecting lines and parallel lines. ये सब पढ़ाया हुआ है, ये रिवीजन हो रहा है स्टूडेंट्स. ऑल द टर्म्स you must write in copy, revise properly, learn, then solve worksheet and BT question यानी brain teaser question. Now topic intersecting line. Intersecting lines. Two lines in a plane which cut each other at one point. Two lines. Intersecting line, any two line. Suppose that first line M, second line MN. Two line which same point पे cut हो रहा है. These two line M and M are parallel. We symbol with M parallel N. हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, M parallel to N. Two lines which intersect, cut, meet, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. intersect, cut, meet, क्रॉस, इसमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप. Two lines which intersect same point, two lines which cut each other, meet at a point, cross at a point is called parallel lines. Parallel lines का ये सिंबल है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं M parallel to N. And parallel lines, this symbol for parallel lines. Parallel lines का ये there are some mistakes to intersecting lines. Two line M and N which intersect with O is called intersecting line. We use cut, we use meet, we use cross, we use intersect, any word. स्टूडेंट्स, यहाँ मुझे ये बताना था कि पॉइंट O is called point of intersection. Point O is called point of intersection. Point of intersection. M and N two line meet at a point is called intersecting line. M and N intersecting line. But these two lines meet these points. This point is called point of intersection. Other topic, parallel lines. Other topic is parallel lines. Parallel lines. Two lines, suppose that line M and suppose that other line N, which do not meet anywhere in plane. Two lines which do not meet anywhere in plane,
these two line is called parallel line, and we represent parallel lines M parallel N. ये M parallel N parallel line के लिए है, मैंने मिस्टेक से इंटरसेक्टिंग लाइन में बताया था, फिर उसको मैंने सुधार लिया, सॉरी फॉर डैट. Parallel lines, two line which do not meet anywhere in plane is called parallel lines. Parallel line represented by this symbol M parallel to N. Next, concurrent lines. Next topic, concurrent lines. Concurrent lines. Three or more line in plane which pass through same points. एक पॉइंट दिया है, if two line cross then intersecting line. यदि दो लाइन क्रॉस होता है सेम पॉइंट से तो इंटरसेक्टिंग लाइन, बट मोर देन टू लाइन इंटरसेक्ट, that means three or more line, यानी more than two line, we can say more than two lines. Otherwise we can say three or more lines intersect same points. These lines M, N, P are called concurrent lines, and the point where these lines are crossed, यह पॉइंट O जहां से ये सारे लाइन क्रॉस हो रहे हैं, दिस पॉइंट O इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंस. पॉइंट ऑफ concurrence. The definition of concurrent lines, that we clear. Three or more lines, या हम ऐसा कर सकते हैं more than two lines in a plane which pass through the same point are called concurrent lines. The point through which this line pass is called point of concurrence. Students, almost all the terms of this chapter we revised now, and I instructed all of you, all the points that we discussed now, revised now, you must write in rough copy, learn, revise, and do complete worksheet question with brain teaser. This is your homework. Your homework is, आइए लिख देते हैं, आपका होमवर्क क्या है? Your homework will be WL, यानी write and learn and revise of taught terms. Taught terms of unit 8. टॉट टर्म का मतलब जो टीच किया हुआ टर्म है, पढ़ाया गया टर्म्स है, जो अभी मैंने रिवाइज कराया. ऑल दिस टर्म्स यू मस्ट राइट इन कॉपी, रिवाइज प्रॉपरली एंड कंप्लीट वर्कशीट विथ ब्रेन टीचर. ओके, थैंक्स.